Students, this is our chapter number 3, pair of linear equations in two variables. You have already studied about the linear equation in one variable in the previous classes, where the linear equation in one variable form was form of linear equation in one variable. We have seen form was ax plus b equal to 0. Okay, where a is not equal to 0. Also in class 9th you have seen linear equations in two variables, and its form was ax plus by plus c equal to 0. So you have seen in standard 9 ax plus by plus c equal to 0. This is the form of linear equation in two variable where x and y are variables, a, b, c are constant term. Variable means the unknown quantities. So it was the form of linear equation in two variables, but now in standard 10 we have to study about the pair of linear equation in two variable. So what will be the form? Form of pair of linear equation in two variable. It is like that: a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So if any equation is written in this form, then it is called linear equations in two variables. Pair is, the word pair is mentioned here because two equations are here. The equations are in the pair. Otherwise, if the equations will not be in the pair, it is not possible to find out the values of the variables. Okay. Just after this, let us talk about few important things. Suppose conditions. So conditions. First condition is for unique solution. For unique solution, condition is a1 by a2 not equal b1 by b2. This is called unique solution, also called intersecting line. So if a1 upon a2, a1 and a2 are the coefficient from the equation 1 and 2, b1 and b2 is also the coefficient from the equation 1 and 2. This one is the coefficient of x, this one is the coefficient of b. So if they are not equal, then it is called the unique solution, or when we represent this equation, they will have intersecting lines. जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसके ग्राफ में कुछ ऐसा होता है, ए लाइन बनी और एक जो दूसरी लाइन जाएगी वो कहीं ना कहीं इसको क्रॉस करती है. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. और इसका अगर ये यूनिक सॉल्यूशन में है तो इसको सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, और इस तरह के इक्वेशन को कंसिस्टेंट भी कहा जाता है. कंसिस्टेंट. Number 2, for no solution. No solution is also called parallel lines. Here we can't get the value of x and y by solving the equations. Condition is a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal
C1 upon C2. So you know that A1, A2 is the coefficient of x in the first and second equation. This is the coefficient of y in first and second equation, and these are the constant term from first and second equation. If such type of condition is there, then it is called no solution, and the graphical representation will be the parallel lines like this. You will get parallel lines like this. Third one is for infinitely many solutions. Or it is also called coincident line. Coincident lines. This one, okay, this one is also called coincident line, and in coincident lines we get the condition like this: A1 upon A2 equal B1 upon B2 equal C1 upon C2. The graphical representation is coincident lines, means one line on the other. मतलब एक लाइन बनेगी और उसी के ऊपर दूसरी भी बनेगी, इसलिए इसको कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन. ये इनकंसिस्टेंट होता है, नो सॉल्यूशन, ये भी याद रखना पड़ेगा. इनकंसिस्टेंट. और दिस वन इज टेकन एज कंसिस्टेंट. So unique solution and many solution is taken as consistent, and the no solution is taken as inconsistent. So these are the basic things about the linear equation in two variables. Okay, now we are going to the exercise to solve the question. Just see exercise 3.1. In exercise 3.1, question number 1 is Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also from 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो क्वेश्चन का मतलब है, आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 टाइम्स ज़्यादा बड़ा था, और आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा रहूँगा. तो इसको ग्राफिकली इक्वेशंस बनाने हैं और अलजेब्रिकली. तो लेट अस सी. हम लेट करेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years and daughter बी y years. तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज को x ले लिया, डॉटर की एज को y ले लिया. अब क्वेश्चन है कि आफ्टर 7 years एगो, 7 साल पहले, तो 7 years एगो आफ्ताब वाज. अभी आफ्ताब x का है, तो 7 साल पहले x माइनस 7 का होगा. तो डॉटर वाज y माइनस 7. कंडीशन था अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x माइनस 7 एंड y माइनस 7. आफ्ताब 7 टाइम ज़्यादा था, तो अगर डॉटर में हम 7 मल्टीप्लाई करें तो बीच में इक्वल का साइन है, वो सेटिस्फाई होगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे. यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा x माइनस 7y माइनस 49, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. Similarly, we will see the second condition which is given in the question, that after 3 years,
3 साल बाद। तो सबसे पहले 3 साल बाद इन लोगों का एज हम निकालेंगे कि कितना हो गया। तो लिखेंगे आफ्टर 3 years आफ्ताब विल बी, अब आफ्ताब की एज x + 3 years की हो जाएगी और डॉटर विल बी y + 3। उस समय जो कंडीशन था अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, आफ्ताब 3 टाइम ज़्यादा था अपने डॉटर से, तो डॉटर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो गए। x + 3 3y + 9, x - 3y = 9 - 3 x - 3y = 6. This is equation number 2. So we have solved the question graphically. We have solved the question algebraically. To solve it graphically, we need to have the graph paper. So this is the solution of the question paper, question number 1. Because you are not having the facility of graph here, so we are not doing this question graphically. Now we will take the question number 2. Question number 2, 3 questions are here in this question, in this exercise. The question number 2 is, a coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3900. क्रिकेट टीम का कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदा 3900। यहीं से स्टार्ट करो कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट EX and 1 ball EY. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, उसने कितने बैट खरीदे हैं? 3 बैट्स। तो 3x, एक बैट x का है तो 3 बैट 3x का होगा, और बॉल खरीदा है उसने 6, तो 6y = 3900. This is equation number 1. Similarly, according to second condition, में उसने later she buys another bat and 3 more balls. तो एक बैट that is x, 3 more balls that 3y and equal to 1300. So this is the algebraical interpretation of the question number 2. Let us move for the question number 3. All these questions are simple. We are doing only the algebraically here, only preparing the equations but not solving them. Just see question number 3. Question number 3 is, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कीमत जो है 160 है। तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, 2 अननोन क्वांटिटी है, एप्पल और ग्रेप्स। तो लेट करो कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू x and 1 kg grapes इक्वल टू y. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जस्ट सी 1 kg एप्पल x का है, तो हेयर उसने ख़रीदा है 2 kg एप्पल, तो कॉस्ट ऑफ 2 kg 2x, और कितना ग्रेप्स है? ग्रेप्स है 1 kg, तो y दोनों मिला के उसको पे करना था 160. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में उसने आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स. तो 4 kg एप्पल दैट इज 4x एंड 2 kg ग्रेप्स दैट 2y. द कॉस्ट वाज ₹300. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो वी गॉट द बोथ इक्वेशंस फ्रॉम हियर. वी हैव टेकन द इक्वेशंस
Algebraically we have solved the questions but are not yet find the value of x and y. That is another thing that will be done in the next exercises, and also graphical representation will be there. So this is all for today. Thank you.